And Happy New Year to all of you. And Today date is 3rd January 2024, and today we are before treatment live. And these are the patient who came for their communication disorder treatment. I'll be showing to them. And in the future we are going to do post treatment live. And don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can watch the post treatment live as well. नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं और आज हमारे साथ जो पेशेंट्स हैं वो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और भविष्य में हम इनका ट्रीटमेंट के बाद लाइव करेंगे। आज हम ट्रीटमेंट से पहले लाइव करेंगे, आप उनकी आवाज़ को सुनेंगे इस लाइव के दौरान। सो द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लाइव आर फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन अबाउट मी, then I'll be talking about our center, then our YouTube channel, and then you'll be listening the patient voice before treatment. And today is 3rd January 2024. So how is their voice today before treatment? And in fact we'll be doing post-treatment live as well in the future. And next I'll be talking on what are the information required before starting speech therapy. And next is kind of service we provide. After that, I'll be talking on high-pitched voice signs, symptom, cause, and treatment. And next will be vocal cord paralysis, signs, symptom, cause, and treatment. And after that, I'll be talking on vocal cord paralysis, signs, symptom, cause, and treatment. Is there any side effect of voice therapy or self-treatment will be the next topic. And then next will be how to contact us. Again, I'll be talking on do we have accommodation facilities at our center. Next, I'll be talking on which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction. After that, I'll be talking on do we have any branch of our center. Next topic will be cost and duration of the treatment for voice and speech disorder. Next will be how do we treat international patient, online or offline. After that, I'll be talking on is saying 1, 2, 3 or saying in new voice is the stage of treatment or the end of the treatment. And after that, I'll be talking on is voice therapy result is permanent. Next will be effect of food and drink on voice. And after that, I'll be talking on announcement of next batch of group therapy. So that I'm doing now only. Our next batch of group therapy is going to start on 26 January 2024. हमारा अगला बैच जो है ग्रुप थेरेपी का स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2024 को. And next will be who are the good candidate for voice therapy. Then I'll be talking on is all high pitch voice or female voice is Puberphonia. Next will be online facilities for communication disorder at our center, and then I'll giving tips to keep your voice healthy. So let's go one by one. So first is introduction about me. My name is Sanjay Kumar. By profession, I'm a speech language pathologist and audiologist, and I have studied from AIIMS Delhi. From AIIMS Delhi, I got my degree named Bachelor of Science Honours in Speech and Hearing, and I did my master in the field of speech language pathology. My master degree name is Master of Science in Speech Language Pathology. I got this degree from the University of Mysore. So I'll be showing my degree how it look like also, because there are healthcare quacks as well. They will be putting their name with the professional like speech therapist, voice therapist, audiologist. So what will be the difference you can find out. So I'll be showing my degree as well. So you should try to find out others degree as well before taking the services. This is my master degree. You can see that if anyone having a degree from the University of Mysore. And next this is my bachelor degree. And so I'm just reading what is written in English. हिंदी है, जस्ट हिंदी में भी सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि संजय कुमार को जुलाई 2004 की परीक्षा में उपाधि के योग्य सिद्ध होने पर 25 सितंबर 2005 के दीक्षांत समारोह में बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स स्पीच एंड हियरिंग की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो आप नीचे में देख सकते हैं दिस रजिस्ट्रार एंड द डीन एंड द डायरेक्टर एंड द प्रेसिडेंट
सिग्नेचर्स ड्यूरिंग एम्स के प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर्स. ड्यूरिंग माय टाइम द इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर वाज डॉक्टर अंबुमनी रामदास, तो उन्हीं का सिग्नेचर होगा लास्ट वाला. तो जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो एक प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, और आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल और झोला छाप के बीच में अंतर. बट मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो ये रहा मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय. एंड yeah, so let's move one by one. And next is our center. So and yeah, about me, there's one important thing is my area of interest is voice disorder. I'm a speech pathologist, speech language pathologist, audiologist, speech therapist, but my passion is in treating voice disorder. And our center name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, that is located in Bangalore. Till now we don't have any branch, and we started this center in the year 2010. From then onward, we are creating awareness of non-surgical management of voice disorder across the globe with the pre-post videos of our patient, those who have given the permission to us. And next is our YouTube channel. Our YouTube channel name is SLP Sanjay Kumar Voice Therapist. I'll be showing this channel, how it look like. ये रहा हमारा YouTube चैनल, और हमने स्टार्ट किया था ईयर 2010 में ये चैनल को. और हमारे इस चैनल पे आपको दुनिया के ऐसा कोई महादेश नहीं होगा जहाँ के क्लाइंट्स आपको प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट वीडियो वाले नहीं मिलेंगे. ऑन दिस चैनल यू विल फाइंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब दे हैव टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम आवर सेंटर. एंड आवर videos, it is almost 1.9k videos, and the subscribers are more than 23,000. So thanks for your love and support. तो ये रहा हमारा YouTube channel. And once you explore our YouTube channel, you'll get a more idea like what kind of communication disorder treated at our center. And that YouTube channel also we started in the year 2010. Next is you'll be listening patient voice like before treatment. तो उससे पहले before that I'll be sharing one information that is very very important. What are the information required before starting the speech therapy or voice therapy or taking audiological services? So friends, every professional speech language pathologist and audiologist will be registered in the Rehabilitation Council of India. So there are other professionals also will be registered in the Rehabilitation Council of India. For example, psychologist, special educator, speech and hearing technician, ear mold technician. So having RCI CRR number doesn't mean that that person is a speech pathologist and audiologist. He should have the RCI CRR number as a speech pathologist and audiologist. So you should be careful. And those who are not sharing their RCI CRR number, it may be symptom of healthcare quacks. And if you want to know my RCI CRR number, just go to the description of this video and try to explore others also if you are going to take any speech and hearing services thinking that he is a speech therapist, audiologist or voice therapist. Because I have seen that many patients, those who come to our center after doing wrong vocal exercise, wrong way of treatment, they develop the like sulcus vocalis, phonatory gap, muscle tension dysphonia, vocal nodule. So your voice and vocal cords are very very precious. So always take help from a certified professional. So now I am going to show you how you will find step by step. So be connected and be ready. So you can do a Google search after writing the Rehabilitation Council of India. So I have taken the screenshot from my mobile. So you can do this, follow this step. तो Rehabilitation Council of India अगर आप Google search में करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा. Then you can go to the next step. First you'll be doing Google search in the Rehabilitation Council of India. Then you can click the About Us. Then you'll be reaching to this place. This is the Rehabilitation Council of India, Government of India's website. So here you will be seeing 3 lines. Click these 3 lines. Then you will reach to this place. Come down and you will find here CRR registered. So click the CRR registered, because every professional speech language pathologist and audiologist and other professional also, those who are working in the rehabilitation field, they will be having CRR number. So just click the CRR registered. Then go to the next. Then you will find this page. Then second line is search by CRR number. So this second one you can click, and then you will be reaching here. Search by CRR number. So put that CRR number of that professional here, and then you can submit. And then
you will find all the details of that professional. So if someone is having just CRR number, doesn't mean that he is a speech pathologist and audiologist, because other professional like psychologists, special educator, ear mold technician, speech and hearing technician, they may have the CRR number. So you need to find out that person is registered or having the CRR number as a speech pathologist and audiologist. So you need to find out. And apart from that, what you can find out, like from which college he got the degree, from which speech and hearing college, from which medical college he got the degree, what is the name of the degree, what is the full form of the degree, and what is the college name, and in which year he got the degree. So just try to find all this information. And he has not mentioned in the social media all this information, but he's projecting himself as a speech pathologist, audiologist, or he or she. So then it can be a symptom of healthcare quacks. So be careful, your voice, vocal cord, your health is very, very precious. So my job, apart from treating communication disorder, is to creating awareness of my profession, so that healthcare quacks should not spoil anyone's voice or a speech problem or hearing problem. So this was then a small effort to create awareness, and next will be, you will be listening to the patient voice before treatment. So one by one I'll be calling. First I'll be calling सुजाउद्दीन. तो प्लीज़ कम हियर. तो आ जाइए, हम लोग लाइव हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हैं, तो भविष्य में इनफैक्ट ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे. तो बताइए यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ हमारे सेंटर? देखो, बोलने में तकलीफ होता है, पतली आवाज़, फ़ोन करते वक्त मैडम करके पुकारते हैं. कहाँ से आए हैं आप? मैं आया वेस्ट बंगाल से. वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह से आए हैं? वेस्ट बंगाल में कलकत्ता. तो आप कलकत्ता से बैंगलोर आए, हमारे सेंटर पर भरोसा किया, थैंक यू सो मच. थोड़ा बंगाली में भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. আমার শব্দ পাতলা বলার কষ্ট হয়, ওই জন্য ফোনেতে বলে ম্যাডাম. ठीक है, हम लोग आपकी वॉइस की समस्या को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे, बैठ जाइए आप वहाँ बैठ जाइए. नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे गौरव परमार. तो आ जाइए गौरव जी. सो फ्रॉम विच प्लेस यू केम, व्हाई यू केम? सर मैं हिंदी में बात कर. हाँ, हिंदी में बोलिए. तो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? मैं झाबुआ से आया हूँ, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है, वहाँ से आया हूँ. मेरी आवाज़ पतली हो गई काफ़ी टाइम से, बोलने में तकलीफ़ होती है. मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि मैं गौरव बात कर रहा हूँ. कभी कभी बोलते हैं कि लड़कियों जैसी आवाज़ हो गई है. ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इनफैक्ट हम लोग 8 दिन के बाद ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे. तो those are watching this live video, please subscribe our YouTube channel, press the bell icon, so that in the future once we will be doing post treatment live, you can watch this patient's post treatment videos also, and you can see the difference. So thank you Gaurav. Next is Manish Kumar, I'll be calling. तो मनीष कुमार, बताइए क्यों यहाँ पे आए हैं, और ट्रीटमेंट से पहले का वॉइस सैंपल चाहिए. जी सर, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं यूपी आगरा ज़िले से आया हूँ. और हम लोग लाइव भी हैं. जी सर. हाँ जी, यूट्यूब पर. सर मेरी एक्चुअली थोड़ी आवाज़ 2 साल से मतलब कि बहुत लो, मतलब कि हाई लाउडनेस बहुत कम हो चुकी है. तो मैं जैसे मार्केट है, एरिया है, इधर साइड थोड़ा बात करने में मेरा गला थक जाता है. मतलब कि कुछ ऐसे लगता है जैसे मेरी यहाँ की नसें बहुत खिंचाव है. और डॉक्टर ने बोला था कुछ गैप है. आपका वेंट्रिकुलर फोनेशन भी है ना? क्या नाम आपका? मनीष है ना? जी जी सर. हाँ, तो आपकी फॉल्स वोकल कॉर्ड में मूवमेंट का है, वेंट्रिकुलर फोनेशन है. जी सर. ENT फाइंडिंग्स जो रही आपकी वेंट्रिकुलर फोनेशन लिखा हुआ था. जी सर. ठीक है, और क्या समस्या होती है इसके अलावा? सर डे बाई डे जैसे किसी से बात करते हैं हम, जैसे किसी से बात करें तो 5-10 मिनट बात करके नॉर्मली, तो फिर मेरे साइड मतलब दर्द होता है, बोलते बोलते थक जाता हूँ सर. तो इससे काफ़ी समस्या से गूंज रहा हूँ मैं. मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है. कौन सी जगह से हैं सर? मैं आगरा यूपी. ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश. पता नहीं, कभी कभी मेरी थोड़ी हाई पिच भी आ जाती है, मतलब जैसे गला बैठने लगता है तो हाई पिच भी. अच्छा, हाई पिच आ जाती है, बोलने में एफर्ट लगाना पड़ता है, और ENT फाइंडिंग है वेंट्रिकुलर फोनेशन. जी सर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेशेंट को बुलाना चाहेंगे. आप बैठ जाइए. नेक्स्ट है सुचेत.
Yeah, Suchit. So we are live before treatment. So just tell about us. What is sir. the problem? What are the problem you're facing? Yes, sir. Mainly high pitch issue. Whenever I'm speaking on phone, people are unable to recognize me and my mother. So whenever I'm louder, I think it faces more. So So from which place you are? from Karnataka itself, and presently I'm in Bangalore, sir. Mm-hmm. So how this voice is affecting your career? And Yes, sir. Especially during interview and all, I feel I am unable to give my best. So if I do better, I think it would help in my. so do you have any interview in the future Yes, sir. I am appearing for various competitive examination. for any written examination you have Yes, cleared? sir. For UPSC, I am appearing. So Hmm. I think I would feel better if my voice improves. So written is you have cleared? Yes, sir. Mains I have cleared. Means you have cleared. Yes, sir. Okay. So next is the interview. Yes, sir. So when is your interview? So date is not yet announced. So I feel. I best of luck for UPSC interview. Yes, I sir. hope you will be very soon Thank you, sir. clear the UPSC sir. examination and IAS officer. Thank you, sir. And so how do you think that this new voice is going to help your profession in the future and your interview? Sir, I think public service is all about interacting with people. So I think having a good voice will give me confidence to interact with people in a better manner. Is what I feel, sir. Yeah, it's very important thing you told, and not only for the public servant. I feel that in any profession, if you have a good communication skill, then you can project yourself in a better manner. So either it's a service or product, anything you can sell in a more effective manner. And apart from that, you can give a best service. And people means you know everything. You have very good knowledge. But if people Unable don't to know, express. then how they will take advantage from you? Yes, sir. Benefit from you. Communication is a very important. Very, very important. I have seen mostly the students will be more concentrating on academic things. Yes, I am not telling that you should not focus on academic, but apart from the academic, you should focus on the good communication skill. Yes, sir. That is my personal opinion. So thank you. You came here and you have shown faith in us, and we'll do the needful. And after 8 days, we'll be doing post-treatment live. Yes, sir. So those who have the curiosity, like how his voice going to be changed in the future after 8 days, please subscribe our YouTube channel, press the bell icon, and don't forget to watch the post-treatment live as well. So thank you, Suchit. Yeah, I'll be calling next patient, Alok Raj. यस आलोक, तो बताइए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सर मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, बोलने से बहुत ज़्यादा गला सूखता है। तो कहाँ से आए आप? बिहार। बिहार में कहाँ से? बिहार नालंदा। तो आपने कुछ टेस्ट वगैरह कराया था आने से पहले? हमने कुछ सजेस्ट किए होंगे तो, या फिर पहले से भी कुछ कराया था? हाँ पहले से कराया था। क्या फाइंडिंग आई है? कोई फाइंडिंग नहीं है सर, मैंने पहले भी नहीं, एक तो शायद आपका वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का फाइंडिंग था ना? कौन सा वाला वोकल कॉर्ड? लेफ्ट वोकल। हाँ, आप कह रहे हैं कोई फाइंडिंग नहीं है, फाइंडिंग है लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। हाँ जी, तो कब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ? 2020। 2020। सो लास्ट 3 साल लगभग से। क्या बीच में कोई ट्रीटमेंट भी लिया था? बीच में ट्रीटमेंट लिया था पटना में, मेदांता में, बट और सा कोई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम का मैंने देखा कि वॉइस थेरेपी से फ़ायदा होता है। मुझे पता नहीं आपने कौन सा मेथड अपनाया था, और तो वॉइस थेरेपी से काफ़ी पेशेंट हमने फ़ायदा होते हुए देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके केस में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अपनी हॉबीज़ बताइए। प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग मूवी, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, विल डू द नीडफुल। थैंक्स फॉर कमिंग एंड शोइंग फेथ। और नेक्स्ट है अरमान सिंह। तो अरमान कहाँ से आए हैं बताइए? पंजाब लुधियाना। अच्छा, क्या समस्या होती है आपकी वोकल कॉर्ड में? क्या समस्या है? डॉक्टर ने क्या फाइंडिंग बताया है? सर डॉक्टर ने कहा था कि मतलब मेरे राइट वाले वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस है। राइट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है। Yes, sir. तो इससे बोलने में क्या दिक्कत होती है स्कूल में सर आपको? स्कूल में लाइक जब मैम बोलते हैं, मैं बैक सीट में बैठता हूँ क्लास की, तो मैं मतलब मैम तक आवाज़ ही नहीं जाती। मतलब मेरी आवाज़ काफ़ी लिमिटेड है, लाउड नहीं बोल पाता। कहाँ से आए हैं? पंजाब लुधियाना सर। अच्छा, तो आप पंजाब लुधियाना से बैंगलोर आए पे भरोसा किया। हम आपकी ये समस्या को ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि इनकी वॉइस में क्या चेंजेस हो पा रहे हैं 8 दिन के बाद, इनफैक्ट आपका ट्रीटमेंट इवन 8 दिन के बाद भी चलेगा, 8 डेज़ के बाद भी चलेगा, लेकिन फिर भी 8 दिन में क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
थैंक यू। मुझे लगता है सारे लोगों का कर दिया लाइव ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन कई सारे लोग जो है लाइव के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। नहीं, जो लोग लाइव के लिए कंफर्टेबल हैं उनका मैंने कर दिया है, और भी पेशेंट्स हैं जो भी लाइव के लिए comfortable हैं। तो जो लोग भी लाइव के लिए कंफर्टेबल हैं उनका मैंने लाइव कर दिया है, और जिन लोगों ने परमिशन नहीं दिया है लाइव के लिए उनका हमने नहीं किया। तो एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके नेक्स्ट टॉपिक पे। Next topic is kind of service we provide. So to understand the kind of service we provide, my suggestion is please explore our YouTube channel. And if you go to our YouTube channel, please press this playlist. And once you press the playlist, you will find different communication disorder videos. And all the videos will be having pre and post treatment videos. And before treatment, I tell the date. After treatment also, I'll be telling the date. So you'll be knowing how much time it took to treat, and after comparing before and after voice sample, you'll be able to understand how much changes we did. For example, if you'll explore our playlist, you'll find the vocal cord paralysis patient videos before and after treatment, stammering, puberphonia, high pitch voice, functional aphonia, functional dysphonia, sulcus vocalis, phonatory gap, misarticulation, after stroke aphasia happens for stroke patients. Even after doing the hearing testing, and once we fitted the right hearing aid, correct hearing aid to the patient, how their communication improved. So you'll all kind of playlist will be able to find. So my suggestion is please explore our YouTube channel playlist to understand what kind of service we provide. And next is high pitch voice signs, symptom, cause and treatment. So before understanding, before going to this topic, high pitch voice signs, symptom, cause, treatment, my suggestion is let's first discuss normal speech production mechanism. Once we'll understand the normal speech production mechanism, it will be easier for us to understand the abnormal. For normal speech production, first thing is the thoughts. First the thoughts will be coming in the brain. पहले दिमाग में thoughts आते हैं, फिर हम लोग सांस लेते हैं, we'll take the breath and that air will go to the lungs. Once we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. So once you put air pressure below the vocal cord will start moving like a string of a violin and guitar and sounds and rate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. These are known as articulators. So once you say one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sounds and rate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words. In each word, there are so many sounds. Each sound's own place, own manner of articulation. And so it's quite complex process. Speech production mechanism is a complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among these muscles will not be there, speech fluency will be getting affected. So that can be seen in case of a stammering. Like there will be lacking of the coordination among the speech production muscles with the brain. So let's discuss, and if the place of articulation will be wrong, manner of articulation will be wrong, there will be pronunciation problem. So I was talking about a high pitch voice, signs, symptom, cause and treatment. So in high pitch voice, if a boy whose age is more than 13-14 years and still he is talking in a childish voice, when he's calling on the phone, people they are thinking that I am talking to a small kid or I am talking to a female. So it can be a symptom of a high pitch voice. मतलब कोई अगर लड़का है जिसकी उम्र 13-14 साल से ज़्यादा हो गई है, अगर फ़ोन करता है तो लोग उसको छोटा बच्चा समझते हैं या लड़की समझ लेते हैं क्योंकि उसका चेहरा नहीं देख पा रहे होते हैं, तो ये हाई पिच वॉइस के सिम्टम हो सकते हैं. And cause and treatment. So as I told, here we have larynx. Inside the larynx we have two string-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cord start moving like a string of violin and guitar and sounds and rate. But at the same time vocal cords will be coming closer together also, and there will be very small gap. So what happened during puberty, vocal cord mass and the length will increases due to a hormone called testosterone in case of boys. तो लड़कों के केस में क्या होता है कि puberty के दौरान जो है किशोरावस्था के दौरान वोकल कॉर्ड की मास और लेंथ इंक्रीज होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से. कहने का मतलब प्यूबर्टी से पहले वोकल कॉर्ड एक पतली स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर थी. प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो एक मोटी स्ट्रिंग की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है. तो गिटार अगर आपने देखा होगा तो गिटार के केस में अगर जो पतली स्ट्रिंग होती है वो पतली आवाज़ प्रोड्यूस करती है, मोटी स्ट्रिंग मोटी आवाज़ प्रोड्यूस करती है. तो अब उस लड़की की आवाज़ कैसे होनी चाहिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इम्पैक्ट के बाद मोटी आनी चाहिए क्योंकि आवाज़ की तारें मोटी हो गई हैं. लेकिन उस बच्चे ने बचपन से मतलब ले करके
और प्यूबर्टी तक पतली आवाज़ में बात किया, और अब जो है वोकल कॉर्ड मोटी हो गई है, मोटी आवाज़ प्रोड्यूस करने में सक्षम है, लेकिन इतने सालों की आदतों की वजह से वो नई आवाज़ पे शिफ्ट नहीं हो पाता है। रीज़न कह सकते हैं थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल। तो वो क्या करने की कोशिश करता है, वो अपनी पुरानी आवाज़ को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन वोकल कॉर्ड तो मोटी हो चुकी है, तो पुरानी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना शुरू कर देता है कि पूरे वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट ना करा के सिर्फ थिन एजेस को वाइब्रेट कराने लगता है वोकल कॉर्ड को। तो कहने का मतलब वोकल कॉर्ड एक मोटी स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर है, लेकिन बिहेव करती है एक पतली स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर की तरह। तो जब वोकल कॉर्ड एक पतली स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगी तो आवाज़ कैसी आएगी, पतली। तो एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं क्या करता हूँ, पूरे वोकल कॉर्ड के मास और लेंथ को स्टिमुलेट कर देता हूँ। तो फिर क्या हो जाती है, वोकल कॉर्ड जो पतली स्ट्रिंग की तरह की बिहेव कर रही थी वो एक मोटी स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगती है और आवाज़ मोटी हो जाती है। तो यह है इसके पीछे का बायोफिजिक्स। इसको थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ, कुछ लोग इंग्लिश में समझने वाले होंगे। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी vocal cord mass length increases due to a hormone called testosterone. So once the vocal cord mass will increase, length will increase, pitch reduces. Before puberty, vocal cord will be a thin string of a guitar-like structure in case of boys. But during puberty, due to the testosterone hormone impact, vocal cords become thick string of a guitar-like structure. So when the guitar string will be the thin, pitch will be higher. When the guitar string will be the thick, pitch will be lower. So that boy from childhood to puberty has spoken in a high pitched voice, and during puberty vocal cord mass got increased, length got increased, it is ready to produce the low pitched voice. But because of so many years habit, we can say that maybe the psychological reason, he will be trying to use his childish voice, but vocal cord has become thick. So what we'll start doing, instead of vibrating the whole mass and the whole length of the vocal cord, he will start vibrating thin edges of the vocal cord. So the vocal cord actually a thick string of a guitar like structure, but it will start behaving like a thin string of a guitar like structure, and the voice will be high pitched, feminine, we can say that, or childish. So as a speech pathologist, speech language pathologist, voice therapist, what we do in the voice problem. And so I was talking about high pitched voice, sign, symptom and cause and treatment. But high pitched voice is a kind of we can say that high pitched voice can be due to some other reason also. Suppose if nature has not given the sufficient vocal cord mass and the length, vocal cords are thin, or due to the muscle tension dysphonia, due to the phonatory gap also, or maybe due to the vocal abuse. I have seen, I was reading one article, wrong way of doing vocal exercise or wrong vocal exercise may develop into the sulcus vocalis. Earlier I was thinking like it may be due to congenital reason, the sulcus vocalis, but I have found some studies recently like sulcus vocalis कैन हैपन ड्यू टू द वोकल एब्यूज़. अगर आप गलत तरीके का वोकल एक्सरसाइज करते हैं, गलत तरीके से करते हैं या गलत एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक वोकल एब्यूज़ कहलाता है, और वोकल एब्यूज़ कैन रिजल्ट इनटू द वोकल नोड्यूल और इवन द sulcus vocalis also, phonatory gap, even vocal cord polyp also. Smoking is also kind of vocal abuse, so that can also result into the vocal cord polyp. तो ऑलवेज टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द एक्सपर्ट, मीन्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल. और कैसे पहचानेंगे सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वो हम स्टार्टिंग में चर्चा किया है हमने. और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप अपने शहर में या अपने कंट्री में यू आर टेकिंग वॉइस थेरेपी एंड देयर इट हैज़ नॉट हेल्प यू, then immediately don't consider like, okay, I'm not a good candidate for the voice therapy, I should go immediately for the thyroplasty or surgery. No, you need to find the expert who are really trained in the voice disorder treatment, surgical management of voice disorder. My clients list include people from USA also. What does it mean that USA people, those who are coming to my center in USA, there is no speech pathologist? Of course there are speech pathologists. When why they must have taken treatment before coming to India? Then why it has not helped there and here it helped? Maybe the person to whom they had contacted, he was or she was expert in some other communication disorder, because speech pathology field is very broad. There are some speech pathologists who will be expert in the dysphagia management, swallowing disorder. There will be some neurological voice speech disorder management. There will be some fluency disorder management expert. There may be some people like me, voice disorder management. So the person who went to some other professional, maybe they were expert in the delayed speech and language among small children, and he took voice therapy and it didn't work. Then people like me who are expert in the voice disorder, he came or she came here and he improved. तो एक अगर स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच वॉइस थेरेपिस्ट से अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस बात पे स्पेशली
वॉइस डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या पिच प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, कि अगर फ़ायदा नहीं हुआ फोनेटरी गैप की बात कर रहा हूँ, सल्कस वोकलिस की बात कर रहा हूँ, कि अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो इमीडिएटली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच जाना है कि मैं तो वॉइस थेरेपी का सूटेबल कैंडिडेट नहीं हूँ, अब मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं, आपको एक अच्छे एक्सपर्ट को ढूंढ के उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे से जैसे लोगों से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाह रहा था। और तो I was talking about high pitch voice signs, symptom, cause and treatment. And next is the vocal cord paralysis signs, symptom, cause and treatment. तो vocal cord paralysis क्यों हो जाता है? As I told, here we have the larynx. Inside the larynx we have two string-like structure known as the vocal cord. The nerve which supply to the vocal cord technically we call recurrent laryngeal nerve. That is a branch of 10th cranial nerve, vagus nerve. So due to some infection, due to some injury, due to thyroidectomy, during the thyroidectomy, during cardiac surgery, or during some infection, bacterial viral infection, some trauma, that nerve get damaged. So the nerve impulses will not reaching to the vocal cord, and there may be the vocal cord paralysis. Sometimes it may be the right vocal cord, sometimes left vocal cord, sometimes it may be the bilateral vocal cord paralysis. So what we do in the voice therapy, with the voice therapy we try to stimulate the paralyzed vocal cord sometime. So sometimes it gets stimulated, but if some cases we are not able to stimulate that paralyzed vocal cord movement, then what we do, we try to bring the normal vocal cord towards the paralyzed vocal cord. So what will happen, suppose if the right vocal cord is paralyzed and I give the voice therapy and it was not helping, then we'll bring the left vocal cord more towards the right one, so that we can reduce the gap between these two vocal cords. So the like breathiness will reduce and the wastage of air will reduce, then the amplitude of vibration of the vocal cord will increase, so the loudness will improve. So the vocal cord paralysis patient will be having breathy voice, loudness will be less, they will tired very frequently, but once the phonatory gap will reduce, the amplitude of vibration of the vocal cord will increase after the voice therapy, and the loudness will improve and the breathiness will reduce. So this is the biophysics behind the vocal cord paralysis patient. And is there any side effect of voice therapy or self-treatment? So if you are taking a voice therapy from a certified professional who are expert in treating voice disorder, there is no side effect. But when you are doing self-treatment or treatment from the healthcare quacks, there may be it may be a kind of vocal abuse, and that may result into the vocal nodule, phonatory gap, muscle tension, dysphonia, sulcus vocalis. So always take the help from the certified professional who are really trained in this field. And next is how to contact us. So our contact details are in the description of the video, so please refer the description of the video. And even you can do some Google search after writing Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, Bangalore, so you will find all the details of our center. Next is do we have accommodation facilities at our center? So we don't have accommodation facilities at our center, but our team will be helping you to get the nearest accommodation. And next is which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction? Based on my experience, my suggestion is first you should try voice therapy, because if you are going for thyroplasty or surgery, after thyroplasty or surgery you have to go for the voice therapy. Then why you should not try first voice therapy? कहने का मतलब अगर आप सर्जरी कराते भी हैं पिच करेक्शन के लिए, तो सर्जरी के बाद आपको वॉइस थेरेपी लेनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना पहले वॉइस थेरेपी ट्राई किया जाए। अगर वॉइस थेरेपी पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो वॉइस थेरेपी अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी जो है वो बिना वॉइस थेरेपी के अधूरा है। एंड डू वी नेक्स्ट, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ वॉइस थेरेपी और सेल्फ Do we have any branch of a center? So अभी तक हमारे सेंटर का कोई ब्रांच नहीं है. Till now we don't have any branch of our center. Our center is only one, and the name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, located in Bangalore. This one. Water is a very good lubricant. So when you are speaking continuously, you should drink water. And cost and duration of treatment for voice and speech disorder. So we suggest the patient, those who are having communication disorder, to call to us. Our contact details are there in this description of the video. We'll do perceptual evaluation,
And after the perceptual evolution, we may or we may not suggest the stroboscopy or laryngoscopy. After that, we will be commenting about the cost and duration of treatment for voice and speech disorder. For all the communication disorder, we don't suggest the certain test, but sometime we, after perceptual evolution, will be giving the feedback, or sometime after some test. So if you have a communication disorder, my session is, first step is calling to us. And next is, how do we treat international patient, online or offline? So we do treat our international patient by both the method, online as well as offline. But who will be in which category? First we do perceptual evaluation, then we decide it. Is saying 1, 2, 3 or saying in your voice is a stage of treatment or end of the treatment? कहने का मतलब हुआ कि क्या 1, 2, 3 और एक नई आवाज़ में, अगर कोई एक पतली आवाज़ से ग्रसित पेशेंट है जिसकी एज प्यूबर्टी से ऊपर वाली है, 14-15 साल से 13-14 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो अगर उसको किसी ने ट्रीटमेंट दिया, पहली बार आ बोला पतली आवाज़ में, अगली बार आ बोल दिया मोटी आवाज़ में, तो क्या इसको एंड ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये एक स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है। एंड ऑफ द ट्रीटमेंट का मतलब, जैसे हमारे पेशेंट लाइफ के दौरान बात करते हैं कॉन्वर्सेशन, तो जब तक कॉन्वर्सेशन पे पेशेंट ना पहुंचे तब तक ट्रीटमेंट अधूरा है। और ऐसा अगर कोई भी सोशल मीडिया में वीडियो डालता है तो उससे थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है कि नहीं। कहने का मतलब कि आपको जाना है दिल्ली और गाज़ियाबाद में ही जाके आप ताजमहल गाज़ियाबाद में जाके कुतुब मीनार ढूंढेंगे तो नहीं होगा ना। तो आपने बात किया दिल्ली पहुंचाने की, तो दिल्ली पहुंचाइए ना, गाज़ियाबाद में क्यों छोड़ना। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आधी अधूरी नॉलेज के साथ जो है, एक बार पतली आवाज़ में दिखा दिया, फिर एक बार मोटी आवाज़ में, या 1 दिखा दिया पतली आवाज़ में, फिर 1 दिखा दिया मोटी आवाज़ में। तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होना है जब तक कि पेशेंट कॉन्वर्सेशन पे ना दिखे। और कई बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कई सारे जो लोग हैं लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं इस तरह के वीडियो बना करके। इस वॉइस थेरेपी रिजल्ट इज परमानेंट। तो अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है पिच करेक्शन में, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के केसेस में, फंक्शनल फोनिया के केसेस में, इवन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के केसेस में, अगर पेशेंट की वॉइस, जो पेशेंट जो है वो थेरेपी पे रिस्पॉन्ड करता है और जो भी कुछ वो अचीव करता है वो स्टेबल रहती है। कभी कभी हमने रिलैप्स देखा है, वी हैव सीन रिलैप्स इन सर्टेन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल स्टैमरिंग एंड spasmodic dysphonia. Even after treatment, patients sometimes get their previous voice. लेकिन I think in this group, those who are sitting here, nobody is having a spasmodic dysphonia or a stammering. So अब नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। उसके मतलब स्ट्रक्चरली वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन फंक्शनली तो मसल्स में स्पाज्म होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक प्लेलिस्ट है हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पे, अगर उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा उसकी वॉइस कैसी होती है, बड़ा मुश्किल है ट्रीट करना। एक पेशेंट आए थे, हालांकि उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, नेक्स्ट ग्रुप में करेंगे, उन्होंने बोटॉक्स का इंजेक्शन भी लिया था लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो कई बार पेशेंट जो है स्पास्मोडिक डिस्फोनिया वाले बोटॉक्स का इंजेक्शन लेकर आते हैं, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि बोटॉक्स लिया भी तो भी हमारे जैसे सेंटर पे आना ही पड़ता है, क्योंकि बोटॉक्स का इम्पैक्ट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, तो बार बार लोग बोटॉक्स ले भी नहीं सकते हैं स्पास्मोडिक डिस्फोनिया में। तो जब भी अगर कोई स्पास्मोडिक डिस्फोनिया के पेशेंट है बोटॉक्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर से ये भी पूछिए कि कितने दिनों तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, तो ये है नेक्स्ट इज़ वॉइस थेरेपी रिजल्ट इज़ परमानेंट। तो और हाँ, ये क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में बड़ा कॉमन था और अभी भी आते रहता है कि क्या सर जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंट रहेगा कि नहीं। पहले तो पेशेंट के मन में ये डर रहता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा मेरे क्लिनिक में आने से पहले। जब ठीक हो जाता है तब ये सोचता है सर वापस तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था उनके चेहरे पे स्माइल को मेंटेन रखना। तो मैंने क्या किया कि ऐसे पेशेंट के साथ अपना लाइव किया जिनका 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले ट्रीटमेंट किया था। और मैं एक कमेंट बॉक्स में अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मेंशन करता हूँ 35 मिनट्स का वीडियो देखने के लिए। उस 35 मिनट्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो सारे लिंक मिल जाएंगे वैसे पेशेंट का, और एक नहीं मल्टीपल, जिनका हम 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले ट्रीटमेंट किया था। उनके बाद उनके ट्रीटमेंट की इतने सालों के गुजरने के बाद हम उनके साथ लाइव हुए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक का जब सेकेंड वेव के टाइम में मैं भी फ्री था, मेरे पुराने पेशेंट भी फ्री थे, तो मैंने बोला चलो इस चीज़ का आंसर करते हैं मिल करके, रिलैप्स होता है कि नहीं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग उस लाइव को ज़रूर देखिए अगर मन में डर लगता है कि कहीं वापस तो नहीं हो जाएगी ट्रीटमेंट। और मैं ओपनली बताता हूँ कि मेरे क्लिनिक में 2 कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं जिनके केस में ट्रीटमेंट के बाद भी कभी कभी रिलैप्स हो जाता है। एक है स्पास्मोडिक डिस्फोनिया, दूसरा स्टैमरिंग। लेकिन पिच के करेक्शन के या लाउडनेस करेक्शन के केसेस में
या हाई पिच वॉइस या पियरफोनिया के ट्रीटमेंट के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो चीज़ें हम अचीव करते हैं वो स्टेबल रहती हैं। अब तक का मेरा यही अनुभव रहा है। लेकिन हाँ, हेल्थ साइंस मैथमेटिक्स नहीं है, 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन भी आ सकते हैं और हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं। ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट में भी है। तो कई बार हमारे सेंटर पे कॉल आते हैं, सर आप गारंटी लेते हो मुझे पक्का ठीक कर दोगे? मैंने बोला नहीं जी, नहीं लेते हैं। तो आपको जो है, इसलिए हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोफेशन के जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अगेंस्ट में होते हैं। इवन मुझे पता रहता है कि वो पक्का ठीक हो सकता है मेरे अनुभव के आधार पर, लेकिन फिर भी मैं मेल में मेंशन करता हूँ वी डोंट टेक गारंटी, ये वर्ड यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट इज़ वॉइस थेरेपी रिजल्ट परमानेंट? ये तो हो गया। इफेक्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक ऑन वॉइस, तो हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे वॉइस पे पड़ता है। तो तुरंत जो है अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ लेते हैं तो वोकल कॉर्ड चूँकि मसल्स है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे वॉइस की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आती है। तो और तुरंत खाना खा के अगर आप सो जाते हैं तो फूड डाइजेशन के लिए जो एसिड फॉर्म करेगा वो क्या होगा कि थ्रोट में जमा होगा और आपके वोकल कॉर्ड को डैमेज करेगा, तो आपकी वॉइस को भी डैमेज हो सकता है। तो तुरंत खाकर सोना नहीं चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। बातें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो अपनी वॉइस को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ announcement of next batch of group therapies. Our next batch of group therapy is going to start on 26 जनवरी 2024। हमारा अगला जो ग्रुप थेरेपी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2024 को। Who are the good candidate for voice therapy? तो अगर हमारे सेंटर पर आने से पहले, बिफोर कमिंग टू आवर सेंटर, इफ़ यू आर थिंकिंग इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग आई विल अचीव समथिंग, देन ऑल्सो यू आर करेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ आने से पहले ये सोचते हैं कि टाइम और पैसे दोनों ख़राब होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और अगर आने से पहले ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर मैं कुछ अचीव करूँगा, तो भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज है जो लोग फ्यूचर में प्लान करें हमारे सेंटर पर आने के लिए, उनके लिए। एंड इज़ ऑल हाई पिच वॉइस और फीमेल वॉइस इज़ पियरफोनिया? तो सारी फीमेल वॉइस पियरफोनिया नहीं होती हैं। पतली आवाज़ ऐसे केसेस में भी हो सकती है, मसल टेंशन डिस्फोनिया में भी हो सकती है, फोनेटरी गैप में भी हो सकती है, सल्कस वोकलिस में हो सकती है, वोकल एब्यूज़ के बाद भी हो सकती है, नेचर ने वोकल कॉर्ड की मास लेंथ को सफिशिएंट नहीं दिया है उसकी वजह से भी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फीवर एक सिम्टम है फिजिशियन के लिए, लेकिन फीवर क्यों हुआ है उसके कारण को समझ के फिजिशियन फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरह से हमारे पास जब पेशेंट हाई पिच वॉइस की समस्या को लेके आते हैं तो हाई पिच वॉइस एक सिम्टम हुआ, उसके कारण को समझना इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि सारी हाई पिच वॉइस पियरफोनिया नहीं है। पियरफोनिया वर्ड यूज़ करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, प्यूबर मीन्स प्यूबर्टी, फोनिया समथिंग रिलेटेड टू द वॉइस डिसऑर्डर। अगर पेशेंट की उम्र 14-15 साल की है, वो टीनेज में है और उसकी आवाज़ पतली आ रही है, तो उस समय मैं पियरफोनिया कहना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है, पतली आवाज़ लेके हमारे क्लिनिक में आता है, तो पियरफोनिया टेक्निकली कहना मैं सही नहीं समझता हूँ। Online facilities for communication disorder at our center. So we have online facilities for certain communication disorder, but we decide based on the perceptual evolution. So if you want to know you are a good candidate for online treatment, so please call us for perceptual evolution, then we'll be able to comment on these issues. And next is tips to keep your voice healthy. तो अपनी voice को healthy कैसे रख सकते हैं? अगर आपको voice की समस्या है तो भी, नहीं है तो भी, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके काम आने वाला है, तो ध्यान से आप सुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पानी एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है। पानी खूब पीजिए, रूम टेम्परेचर वाला पानी, तो ये एक अच्छा लुब्रिकेंट है। तो आपके वोकल कॉर्ड को ड्राई होने से बचाएगा, तो आप वोकल कॉर्ड अपनी वॉइस को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल वॉइस यूज़र हैं तो, और आम इंसान है तो भी आप पानी खूब पीजिए। तो और दूसरा ये है कि अवॉइड स्मोकिंग करने से वोकल कॉर्ड पॉलिप होने का खतरा रहता है, फिर बाद में सर्जरी करानी पड़ती है, वॉइस थेरेपी लेनी पड़ती है। तो स्मोकिंग इज़ ए काइंड ऑफ वोकल अब्यूज, अवॉइड स्मोकिंग। अवॉइड थ्रोट क्लियरिंग, अगर बार बार आप ऐसे करते हैं बहुत जल्दी बार बार करते हैं, एक आदत बना लिया है, तो वोकल कॉर्ड में फ्रिक्शन होगा, उससे भी आपकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, वॉइस डैमेज हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल वॉइस यूज़र है, सपोज आप टीचर हैं और क्लासरूम बहुत बड़ा है, तो अपने मैनेजमेंट से यू कैन आस्क द एम्पलीफिकेशन डिवाइस टू प्रोवाइड। और इफ़ यू आर ए सिंगर, सो स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन स्टाइल ऑफ सिंगिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग एंड डूइंग मिमिक्री ऑफ सम अदर सिंगर।
and avoid whispering. Like if you are telling like this, my name is Sanjay Kumar. So when you are whispering, you are creating more stress on the vocal cord, and that may damage your voice in the vocal cord. Avoid whispering. whispering की बात आई तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आया. लगभग 13 साल पहले की घटना है. हमारे सेंटर पर एक पेशेंट आया था. उसको एक ऐसे स्पास्मोडिक डिस्फोनिया उसको डेवलप हो गई थी. जब मैंने पूछा कि कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ योर प्रॉब्लम स्टार्टेड, देयर इज़ सम प्लेस इन कर्नाटका कॉल्ड गदग, पता नहीं जो कर्नाटका का हमको मालूम हो, तो उस जगह का पेशेंट है. अगर आप हमारे ओल्डेस्ट वीडियो देखेंगे इस यूट्यूब चैनल के तो उसका वीडियो मिल जाएगा स्पास्मोडिक डिस्फोनिया का. तो वो आया तो मैंने हिस्ट्री उसका ले रहा था कैसे स्टार्ट हुआ. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ वो बताया कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था. तो मैं ENT डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए और मुझे 4 या 5 वीक का कुछ ऐसे उन्होंने बोला वॉइस रेस्ट लेने के लिए. तो उस इंस्ट्रक्शन को वो ठीक से समझा नहीं और उसने क्या किया, 4 to 5 वीक जस्ट विस्परिंग करके बात किया, आपका नाम क्या, आप कैसे हो. और जब 4-5 वीक कंप्लीट हुआ तो विस्परिंग ही बचा हुआ था. ठीक है. फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए वो जितने भी प्रोफेशनल एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, लगभग सब जगह गया. वो मंदिरों में भी गया, जो ब्लैक मैजिक क्या क्या सब कराया. फिर साइकोलॉजिस्ट पास, साइकेट्रिस्ट सब कर्म करके फिर मेरे पास आया था. हमने भी थेरेपी दिया और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी. उसके वीडियोस भी हैं. तो कहने का मतलब कि विस्परिंग कंटिन्यूसली अगर आप करते हैं तो कैसे आपकी वॉइस को डैमेज कर सकता है. तो बातें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं लाइफ में तो वॉइस और वोकल कॉर्ड को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं. और जॉगिंग, वॉकिंग, जिम जाते हैं, कुछ योगा वोगा करते हैं तो आपकी स्टेमिना, बॉडी फिट रहती है. फिट रहेगी, स्टेमिना ठीक रहेगी तो आपकी वोकल कॉर्ड के नीचे जब एयर प्रेशर लगाएंगे तो वो भी एक अच्छे क्वांटिटी में एयर होगा और वॉइस प्रेशन अच्छा होगा, तो वॉइस जो होगी आपकी अच्छी होगी. तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए, अच्छी वॉइस रखनी है तो. और किसी चीज़ से अगर एलर्जी है किसी भी चीज़ से तो उसको पहचानिए, उसको अवॉइड कीजिए. अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो GRD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के दौरान वॉइस वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो आप अपने फिजिशियन से मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. कुछ एंटासिड वगैरह को देते हैं या क्या कहते हैं उनको सुनिए. तो ये सारी चीज़ें अगर अपनाते हैं तो अपने वॉइस को हेल्दी रख सकते हैं. अगर वॉइस की समस्या 2 वीक से ज़्यादा है तो आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल से मिलिए, हमारे जैसे लोगों से या ENT डॉक्टर से भी मिल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप सबों से. और हम लोग भविष्य के बाद में भी ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे. विल बी डूइंग लाइव आफ्टर ट्रीटमेंट एज वेल, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द पोस्ट ट्रीटमेंट. सो दीज आर द पेशेंट हु केम फॉर different places of India for their communication disorder treatment, and in fact we'll be doing post treatment live after 8 days. So please subscribe our YouTube channel, press the bell icon, and don't forget to watch the post treatment live. So thank you all, love you all, thank you so much, love you all.